entrepreneurs are the ones who move economies of the whole world, not only of India but all over the globe. And therefore, when uh, uh, I was asked to take a session here on this platform, uh, I was given a choice to select a topic that I would like to speak on. And I thought, what can be a topic that I can speak on with the entrepreneurs, the budding entrepreneurs? And the topic that came to my mind is, as an entrepreneur, one thing that you must be totally clear always. So, given a choice, if we were to have this session face to face, I would have asked this question to all of you in person and got your responses. But uh, because of the technology, it may be a little bit of a challenge. Uh, but I know you will have many answers in your mind. You will have many answers in your mind as to what is one thing that you need to remember and be totally clear about while becoming an entrepreneur. The journey as an entrepreneur, please remember, is full of challenges, full of difficulties, full of hardships, full of problems. But at the same time, these are the things, when you pass through them, then only you emerge as a true winner. Then only you emerge as a true winner. But today, I'm going to talk to you something which is totally different when it comes to one thing that you need to be totally clear in your mind. And you know what that one thing is? That one thing is, in a business, in a business, that one thing is profit. Profit. So as an entrepreneur, what you need to be totally clear about is this term called profit. And please remember, this is not merely a word. It is power. It is a force. It's energy. It's a driver that will take you places in your endeavor to become a successful entrepreneur. If I was to ask you as to how do you define profit, I'm sure all of you would have given a lot of answers, and I can imagine what kind of answers you would have given. But let us understand the word profit from a different perspective altogether. And what that perspective is how to make use of this word profit, or how to make use of the profit and loss statement as an entrepreneur to take decisions in our business. How to make use of the profit and loss statement or understanding of profit for the purpose of creating value, for the entire humanity through our business. So typically, how do we start when it comes to the profit? So we There now. Is there? Is there? hello. Sir, sir, Okay, 1 minute. You all right? Okay, very good. So was were you not able to hear me from the beginning, or No, sir. After profit, okay, could no you? worries, no worries, no worries. I'll start from there. I'll start from there. Sure, sure. All right. Thank you, doctor. Thank you. So let us understand the word profit, and remember, how do we start and where do we start? So in any business, we start first from the thing called sales. And remember, friends, the sales is also known as bottom line. And let's say, for example, our sales or the sales in our business is 1000 crore. You can take any number, because our idea is to understand the whole concept. Our idea is to get the energy of this word profit, so that we are able to drive our business and take it to pinnacles of success. So the first thing that we start with in understanding profit is the sales, and that is your bottom line also. That is also known as your top line, not bottom line. It is also known as top line. And remember why the sales is known as top line. No rocket science. It is known as a top line because this is the line which appears in the profit and loss statement in the top, and that is the reason why it is known as top line. So what we do from the sales, we minus the first cost that we incur in our business. And what that first cost is, raw material cost. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सेल्स का फिगर है उसमें से माइनस करेंगे एक कॉस्ट,
and that cost is known as raw material cost. And let's say the raw material cost of this business is 300 crore. 300 crore. The second cost that we minus from the sales is your manufacturing expenses, or you can also call it as manufacturing cost. So, and let's say, for example, our manufacturing cost is 100, and so 1000 minus 400, what we get in our hand is 600. And remember, this 600 is known as gross profit. It is known as gross profit. Some people call it as gross margin. Some people call it as gross profit margin. But doesn't really matter. They all mean the same thing. They all mean the same thing. Also understand one more thing. The raw material cost and the manufacturing expenses put together in a business are also known as COGS. And what is COGS? COGS is cost of goods sold. So in other words what we are saying कि जब आप सेल्स में से मटेरियल कॉस्ट को माइनस करोगे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस करोगे तो जो आपके हाथ में बचता है इट इज़ नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट. इट इज़ नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट. Now, in other words, what we are also saying is from the sales, if you minus the COGS, तो अगर आप आपके सेल्स के फिगर में से COGS को माइनस करेंगे तो आपके हाथ में जो बचेगा that is known as gross profit. So first we will understand the entire hierarchy of profit for any business. And remember, this hierarchy is same for all the businesses all over the world. पूरी दुनिया में जितने भी businesses हैं उनके लिए जो profit की hierarchy है वो यही hierarchy है that we are discussing. And then we will understand as to how these numbers are used in a business for the purpose of formulating strategy. So now from the gross profit you minus another cost, and what that cost is known as SG and A. SG and A or SG&A as it is popularly known. What does the SG&A stands for? SG&A stands for selling, general and administrative expenses. Selling, general and administrative expenses. And let's say for the sake of simplicity, this figure is 100 in case of our company that we are talking about. So from the from the gross profit, when you minus the SG&A, what you get a figure of 500. And friends, this figure of 500 is known as EBITDA. मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आप सभी लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपने ये जो टर्म है EBITDA इसको आपने कई बार सुना होगा. You must have heard of this term called EBITDA, and that is your EBITDA. That is this 500 that you have here is your EBITDA. Now please remember this EBITDA is also known as cash operating profit. तो ये जो EBITDA का फिगर है इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं. एंड रिमेंबर आपके बिजनेस में दिस नंबर इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल नंबर. कल को जब आपका बिजनेस बड़ा होगा और अगर आप अपने बिजनेस के वैल्यूएशन करना चाहेंगे तो आपके बिजनेस के वैल्यूएशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर रहने वाला है दैट इज योर एबिटा. सो टुडे दुनिया में जब भी कोई कंपनी whenever a company is being sold or bought, remember how do they decide the price? They decide the price based on the EBITDA. EBITDA, remember, is the lifeline of a business. And why EBITDA is known as cash operating profit? EBITDA को cash operating profit क्यों बोलते हैं? And I'm sure many of you would be able to understand it as to why EBITDA is called as cash operating profit. And that is because you will see that from your operations, how much cash are you getting in your hand? From your operations, you are getting a cash of 500, and that is why EBITDA is also known as cash operating profit. Cash operating profit. क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब यह है कि आपके हाथ में सेल्स किया आपने 1000 रुपये 1000 करोड़ आपके हाथ में आ गए. 300 करोड़ उसमें से चले गए. कहाँ चले गए? जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया आपने उनको पे कर दिया. 100 करोड़ कहाँ चले गए? 100 करोड़ जो मैन्युफैक्चरिंग के जो कॉस्ट आपने करी वहाँ चले गए. और 100 करोड़ और कहाँ चले गए? 100 करोड़ और चले गए सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में. तो आपके हाथ में सेल से आए 1000 करोड़ और आपके पास में बचे कितने? 500 करोड़. एंड दैट इज हाउ रिमेंबर
This 500 is known as cash operating profit. याद रखिए friends, you are the entrepreneurs, you are the startups, you are the businessmen, and in your business, and in your startup, always focus on your EBITDA. Always focus on your EBITDA. And why focus on EBITDA? Because EBITDA is lifeline of your business. तो ये जो EBITDA है, ये आपके बिजनेस की लाइफलाइन है. और ये आपके बिजनेस की लाइफलाइन क्यों है? ये आपके बिजनेस की लाइफलाइन इसलिए है क्योंकि अगर आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए याद रखिए, व्हाट यू आल्सो हैव टू डू इज नॉट ओनली यू हैव टू मेक प्रॉफिट, बट यू आल्सो हैव टू ग्रो. For the long term sustainability, you have to grow. And for growing, what you need to do, you need to incur capital expenditure. You need to build more assets. You need to expand, diversify. And for expanding and diversify, remember you will need money. And where will that money come from? That money will come from your EBITDA. तो जितना आपका EBITDA स्ट्रांग होगा आपके बिजनेस का, उतना आपके बिजनेस को ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलेंगे और उतने ज़्यादा आपके बिजनेस की लाइफ लंबी होगी. Now what we do, so from the EBITDA what we do, from the EBITDA we minus a cost which is known as depreciation and also known as amortization. So two costs that we deduct from the EBITDA is depreciation and amortization. And let us say these two figures put together are again 100 crore. What we get here in our hand is 400 crore. This 400 crore, friends, is known as EBIT. EBIT is earning before interest and taxes, and this is also known as operating profit. This is also known as operating profit. Now I'm sure some of you may be getting a question in your mind as to what is the difference between the depreciation and amortization. तो ये जो दो फिगर हमने लिए हैं, डेप्रिसिएशन का और एमोर्टाइजेशन का, ये दोनों में फ़र्क में ये दोनों फिगर्स में, दोनों आइटम्स में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क बहुत सिंपल है. क्या फ़र्क है? देखिए, इन आवर बिजनेस वी यूज़ टू काइंड्स ऑफ एसेट्स. नंबर वन, वी यूज़ tangible assets, and number two, we use intangible assets. So what is a tangible asset? Tangible asset is one that I can see, I can feel, and I can touch. That is my tangible asset. So something that I can touch, I can feel, and I can see is a tangible asset. So building, property, plant and equipment, computer, furniture, aircraft, train, yacht, helicopter. Now these are all examples of tangible assets. That means you can touch, you can feel, and you can see. The other category of the assets that we use in our business are intangible assets. And what are intangible assets? Intangible assets are those assets that we cannot touch, that we cannot feel, and that we cannot see. So what are the examples of intangible assets? The examples of intangible assets are, number one, goodwill, copyright, brand name, logo, trademark, technical know-how, patent, design, copyright, software. Now these are all examples of intangible assets. So we use two kinds of assets in our business. Number one, tangible assets, and number two, intangible assets. Now please remember, doesn't really matter whether we are using a tangible asset or we are using an intangible assets. The fact that we are using them in our business, their value is diminishing every year. तो ये tangible asset हो या intangible asset हो, चूँकि हम उनको यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो value है, it keeps coming down. It keeps coming down because of the wear and tear and usage. So meaning what? Meaning a reduction in the value of a tangible asset is known as depreciation. So एक बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी प्लांट है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, तो इनकी जो वैल्यू हर साल कम होती है, इट इज़ नॉन एज depreciation. It is known as depreciation. And a reduction in the value of an intangible asset is known as amortization. Is known as amortization. So that is your depreciation and amortization. चूँकि आप लोग entrepreneur हैं और you are aspiring to be an entrepreneur,
let me tell you, friends, depreciation and amortization are also two of the non-cash expenses. So, what is the meaning of non-cash expense? The meaning of non-cash expense is, even though depreciation and amortization are deducted from sales while calculating profit, there is no cash outflow on account of depreciation and on account of amortization. तो ये जो depreciation की cost है और amortization की ये जो cost है वो हम किसी को pay नहीं करते हैं. It is a non-cash expense. It does not go out of the business. It still remains in the business. Now, so what we have is, we have the operating profit, which is 400 crore, and that is EBIT. From the EBIT, what do we do? From the EBIT, we minus finance cost. And what is finance cost? Finance cost is same as interest cost. तो हम बिजनेस में क्या करते हैं? फॉर रनिंग अवर बिजनेस, फॉर मैनेजिंग अवर बिजनेस, for managing our working capital, we or for incurring capital expenditure, we take loans from the banks, and on those loans we pay interest. And so what we do, from the earning before interest and tax, we minus the amount of finance cost or the interest cost, and let us say that figure is 50, and what we get in our hand is a figure of 350, and this figure of 350, friends, is known as EBT. एंड ईबीटी का मतलब क्या है? ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स. तो हमारे ये इस बिजनेस में, हाउ मच दी अर्निंग बिफोर टैक्स इन दिस बिजनेस? अर्निंग बिफोर टैक्स इज 350 करोड़. अर्निंग बिफोर टैक्स इज 350 करोड़. नाउ फ्रॉम दिस ईबीटी वी विल माइनस आवर टैक्सेस. सो जो हम कंपनियां टैक्स भरती हैं, इनकम टैक्स भरती हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज कॉर्पोरेट टैक्स. So this corporate tax which that the company pay, let's say in this case is 100 crore, and 350 crore minus 100 crore, what is left in your hand is 250 crore, and this 250 crore, friends, is known as earning after tax, EAT. So what it is known as? It is known as EAT, earning after tax. और EAT का मतलब है eat, और eat का मतलब क्या है? eat का मतलब ये भी है कि अगर आपके बिजनेस का ये फिगर पॉजिटिव है, देन ओनली यू कैन ईट इन योर बिजनेस एंड नॉट अदरवाइज. सो देयरफॉर in your business you have to ensure that you make profit. You not only make profit, you make handsome profit, and that is your earning after tax. Now please remember, this earning after tax is also known as PAT. तो कुछ लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह के बुलाते हैं, और कुछ लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोलते हैं नेट इनकम. तो सम पीपल कॉल इट एज नेट इनकम, सम पीपल कॉल इट एज net profit, some people call it as net profit, and some people call it as bottom line. So this figure of 250 crore that you have here is also known as by many names. One is earning after tax, because this is the profit which is available with you at the end of your profit and loss statement, and that is why it is known as earning after tax, or profit after tax, or net income, or net profit, or bottom line. And why it is known as bottom line? No rocket science. It is known as a bottom line because you can see this figure is appearing in the bottom of the profit and loss statement, and that is why this is known as bottom line. So friends, this is how you have to understand profit for being a successful entrepreneur. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए आपको क्या समझना जरूरी है, और क्या एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी है, वो है प्रॉफिट. लेकिन याद रखिए, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस. प्रॉफिट के बहुत सारे मीनिंग हैं. एज एन एंटरप्रेन्योर, रतन टाटा हों, लक्ष्मी निवास मित्तल हों, सुनील भारती मित्तल हों, संजीव बजाज हों, राजीव बजाज हों, नारायण मूर्ति हों, जो भी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जिनके नाम हम सुनते हैं पूरी दुनिया में, रिमेंबर, for them profit is not income minus expenses. For them, for every entrepreneur anywhere in the world, profit does not mean merely income minus expenses. For them, profit also means gross profit. For them, profit also means EBITDA. For them profit also means EBIT. For them, profit also means EBT.
and for them profit also means EAT, and that is earning after tax. प्लीज़ रिमेंबर, ये जो द नंबर्स हमने डिस्कस किए, ये जो इट्स जस्ट नॉट अ मेयर कैलकुलेशन. ये जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने चर्चा करी ग्रॉस प्रॉफिट की, जिसमें हमने चर्चा करी अबाउट द एबिडा. We understood what is EBITDA, then we understood as to what is EBIT, and then we understood as to what is EBT, and then we understood what is EAT. Now remember, this chart that we have discussed here, ये जो चार्ट हमने यहाँ डिस्कस किया, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये आपके बिजनेस का रोड मैप है. ये आपके बिजनेस का कि सक्सेस का रोड मैप है. This is the roadmap of success of your business. How? So as an entrepreneur, what you have to do? As an entrepreneur, you have to do everything possible under the sun so that your gross profit is increasing. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या करना है? आपको पक्का करना है कि आपकी सेल्स बढ़ती रहे और आपके जो COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो कम होती रहे. एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? एज एन एंटरप्रेन्योर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर टू डू एवरीथिंग पॉसिबल इन योर बिजनेस सो दैट योर EBITDA keeps on growing. तो क्या करना है आपको? आपको दुनिया में वो सारी चीजें करनी है जिससे कि आपके जो बिजनेस की EBITDA है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए. दिस EBIT का मतलब क्या है? EBIT का मतलब यह है कि इन योर बिजनेस व्हाट यू हैव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल सो दैट योर EBIT इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, योर EBT इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, and your EAT is also increasing continuously. And that is, friends, how you have to understand profit. कि प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब सिर्फ इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं है. प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है EBITDA, प्रॉफिट का मतलब है EBIT, प्रॉफिट का मतलब है EBT, और प्रॉफिट का मतलब है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स. एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, एक कागज पे लिख के ले लीजिए, as an entrepreneur, I have to do everything possible under the sun so that all these numbers of my business are growing continuously. But remember, it does not stop here. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बात खत्म हो गई. You still have to understand one more number, and what that number is known as EPS. That number is known as EPS. And what is EPS? EPS is earning per share. EPS is earning per share. And how do you calculate EPS? You calculate EPS by taking earning after tax. तो आपके जो बिजनेस है उसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स का जो फिगर वो लीजिए, एंड डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी आउटस्टैंडिंग, and that will give you your EPS. Now remember, जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे तो हो सकता है आपको लग रहा होगा ये EPS एक नंबर ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाकी सारे जैसे नंबर हैं वैसे भी ये भी एक नंबर है. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट्स नॉट सो. दिस वन नंबर EPS that you see here is the driver for all the top management all over the world. यानी कि दुनिया में जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, CFO हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब का एक ही ड्राइवर है. टॉप मैनेजमेंट हैं, उन सब का एक ही ड्राइवर है, एंड दैट ड्राइवर इज अर्निंग पर शेयर. क्या मतलब है कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं या चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने भी टॉप के लोग हैं, everyone without any exception is working on one number continuously, and that one number is earning per share. तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट अर्निंग पर शेयर?
And please remember, there is so much great about this number called earning per share. And let us understand how. अब आप देखिए, आई एम श्योर सिंस ऑल ऑफ यू आर परसुइंग योर मैनेजमेंट स्टडीज ऑलरेडी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी keeping a track as to what is happening in the stock market. I am sure all of you must be reading regularly Economic Times, Financial Express, or DNA, or Business Standard, or any other financial newspaper or magazine for that matter. And I am sure every one of you would have noticed time and again कि जब भी किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऊपर जाता है तो तुरंत के तुरंत अगले दिन, और अगर वो मार्केट के बंद होने से पहले अगर वो अनाउंस होता है किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो आपने नोट किया होगा कि जैसे ही एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर का और अर्निंग्स जो रिजल्ट कंपनीज अनाउंस करती हैं उसमें अर्निंग पर शेयर का नंबर जैसे ही मार्केट में किसी कंपनी के बारे में आता है, और अगर ये नंबर अर्निंग पर शेयर, इफ दिस अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी हैज मूव्ड अप, you will notice that the stock price of that company on that day in the stock market also would have gone up. Now what does it mean? It means, remember, it doesn't stop here. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऊपर जाता है तो उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस स्टॉक मार्केट में ऊपर जाती है. एंड रिमेंबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन द स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी मूव्स अप, by default the wealth of the shareholders of that company, wealth of the owners of that company, wealth of the investors of that company also go up. एंड याद रखिए, अगर एक कंपनी की के शेयर होल्डर्स की वेल्थ ऊपर जाती है तो what is their feeling? Their feeling is happy. And when they feel happy, what do? They give bonuses. So they give bonuses. And who do they give the bonuses to? They give the bonuses to the top management. And that is the significance of the earning per share. तो याद रखिए, ये एक अकेला नंबर है जो कि आपको आपके बिजनेस के बारे में बता सकता है कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है. सो दिस इज वन नंबर दैट कैन टेल यू एज टू वेदर योर बिजनेस इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन or your business is going in a wrong direction. Whatever it may be, remember, as an entrepreneur, you not only have to focus on all these numbers, as an entrepreneur, you also got to focus on earning per share. Keep constantly checking as to what is happening to your earning per share of your business. Is the earning per share of your business moving up, or it is stagnant, or it is going down? Remember, if the earning per share of your business is going up, your business will keep on growing. And please remember, why your business will keep on growing? Because अगर आपके बिजनेस की अर्निंग पर शेयर अच्छी है तो दुनिया के सारे लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे. और अगर दुनिया के सारे लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकोगे, और ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकोगे, और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर सकोगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सकोगे. As a result of that, you will be able to increase the effectiveness of your organization, efficiency of your organization, productivity of your organization, and so on and so forth. So friend, today I thought that this would be a right topic for me to discuss with all of you as to, as an entrepreneur, what is one thing that you got to be totally clear always, and that one thing is profit. But remember, profit does not mean income minus expenses. Income minus expenses is for the accounting, for the purpose of decision making, for being in control of your business. Profit has to understood in many other ways, and what those many other ways are, and I'm sure all of you would remember. Number 1 is the gross profit. Number 2 is EBITDA. Number 3 is EBIT. Number 4 is EBT. नंबर 5 इज EAT. और EAT का मतलब क्या है? EAT का मतलब ये है कि अगर ये नंबर आपके बिजनेस में पॉजिटिव है तो आप ईट कर सकते हैं, एंड अदरवाइज नो. एंड फाइनली, ऑफ कोर्स, you also have one more number that you need to focus on, and that number is earning per share. And that number is earning per share. So this is how you understand profit. I am sure, friends, a question must be coming in the minds of every one of you. मुझे पूरा भरोसा है कि एक सवाल जो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, और वो सवाल ये कि क्या कोई
आइडियल अर्निंग पर शेयर है? इज देयर सम आइडियल अर्निंग पर शेयर जिससे मुझे मालूम पड़ सके कि मेरी अर्निंग पर शेयर अच्छी है या अच्छी नहीं है, या ईएटी के मालूम पड़ सके कि मेरा ईएटी अच्छा है कि अच्छा नहीं है? एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, द गुड न्यूज इज दैट देर इज नो सच आइडियल ई अर्निंग पर शेयर। तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई आइडियल अर्निंग पर शेयर का नंबर नहीं है कि आप कह सको कि मेरी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 100 है एंड दैट मीन्स मेरी कंपनी दुनिया में सबसे बेटर कंपनी है, सबसे बेहतरीन कंपनी है। नो, देर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा दुनिया में कहीं पर भी कोई भी रेफरेंस आइडियल नंबर नहीं है कि आप बोल सकें। देन द क्वेश्चन मस्ट बी विल कम टू योर माइंड कि अगर ऐसा भी नहीं है, कोई आइडियल नंबर नहीं है, कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए स्टार्टअप जो मैं कर रहा हूँ मेरे बिजनेस में वो सही है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, बेटर है कि नहीं है? एंड फॉर दैट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द आंसर इज टू फाइंड आउट, to gauge whether your earning per share or your earning after tax अच्छा है कि अच्छा नहीं है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इसको मालूम करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, कंपेयर योर अर्निंग पर शेयर विद दैट ऑफ योर कॉम्पिटिटर। तो अगर आप बजाज ऑटो हैं तो आप क्या करिए, आपकी जो अर्निंग पर शेयर है आप कंपेयर करिए होंडा से, आप कंपेयर करिए हीरो से, आप कंपेयर करिए टीवीएस से, आप कंपेयर करिए पियाजियो से। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एज अ कंपनी टू फाइंड आउट वेदर योर ईपीएस इज गुड और नॉट गुड। तो अगर आपकी कंपनी का ईपीएस जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी से अच्छा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। और अगर आपकी कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में नीचे है, दैट मीन्स यू हैव टू डू लॉट ऑफ टाइटनिंग एट योर एंड, और आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो दैट इज नंबर 1, कंपेयर योर अर्निंग पर शेयर with your competitor. Number 2, what you can do is compare with your industry norm. तो याद रखिए, हिंदुस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी अलग अलग बिजनेस एसोसिएशंस हैं। फिकी है, एसोचैम है, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और आईएमसी है, इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स है, सीआईआई है, एक्मा है, एसआईएएम है। तो बहुत सारी बिजनेस एसोसिएशंस हैं। And all these business associations, what do they do? From time to time, they bring out with the industry norm. तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं आपको कि इस इंडस्ट्री में अर्निंग पर शेयर, एवरेज अर्निंग पर शेयर कितना है। तो सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू, कंपेयर योर अर्निंग पर शेयर विद द एवरेज earning per share of the industry, and you will get an idea as to how you are doing. Number 3, what you can do is compare your earning per share with your last year, with your previous year. So आपके लास्ट ईयर में जो आपका अर्निंग पर शेयर था उससे कंपेयर करिए करंट साल के अर्निंग पर शेयर को। इन द करंट ईयर इफ योर अर्निंग पर शेयर हैज गॉन अप in comparison to the last year, that means your company has done well in this year in comparison to the last year. Or if your EPS has gone down in the current year, that means a lot has to be done at your end, tightening your belt, because अगर आपकी EPS नीचे गई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये साल में आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टू कंपेयर योर ईपीएस विद योर बजट। तो याद रखिए, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, वो सारी की सारी कंपनियां साल के शुरू होने से पहले एक बजट बनाती हैं। और आप भी याद रखिए, आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हैव अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनुअल बजट। यानी कि 22, 23, 24 के साल के स्टार्ट होने से पहले आपका 23-24 साल का बजट तैयार होना चाहिए। So that you know as to in which how your business is progressing. Is your business is progressing as you have planned, or it is going haywire? So what you can do, fourth, to find out as to how are you performing, compare your actual earning per share with your budgeted earning per share. And if you realize that your actual earning per share
is better than your budgeted earning per share, you can give a pat on your back and feel happy about it because your company is doing better than your budget. But if your actual earning per share is lesser than your budgeted number, that means there is a lot more tightening to be done. And friends, this I thought to discuss with you as profit. As profit, please remember, the purpose of a business is to create value by making profit. तो दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब का क्या पर्पस है? एक ही पर्पस है, एंड दैट इज टू create value by making profit or make profit by creating value in your businesses. Remember, you also have to do the same thing: create value by making profit or make profit by creating value. And for that, understand the word profit very, very clearly. Always remain focused in your business on this word called profit, and remember, profit by creating value. And I'm sure if you remain focused on this word profit, you and your business will go a long way, and you will create value not only for yourself but for the society and also for the nation. So with this I come to the end of my session. In case if there are any questions, I would be very happy to take them. Thank you so much. Thank you.